Friends, let's see this question. This is mostly important for the EC fellows, probability based questions. Okay, EC के लिए बहुत important है, 1 mark के लिए expect कर सकते हैं. So x1, x2, x3 are independent binary random variables. When I say binary random variable, what does it mean? So x1 and x2, x3, x1, x2, x3 basically take only two values, 0 or 1, with a random probability. He's telling that probability of x1 equal to 0 is 0.3. ठीक है. So इसका मतलब x1 equal to 1 probability क्या होगा? What's going to be probability? 0.7, because sum of probability should be 1. Okay. Similarly, probability of x2 is equal to 1 should be equal to 0.6. Okay. Probability of x3 is equal to 1 is equal to 0.5, because they are binary random variables. Now he's creating a new random variable called z or z. ठीक है. So now, so let's say for example, let's write the truth table x1, x2, x3. ठीक है. Let's write the truth table 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. Okay, let's write the truth table. Okay, this is min term m0 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6 and 7. He is creating a new random variable. Okay, it's called z. What are the minterms? Tell me. 1 2 5 7. 1 2 5 7 are minterms. So 1, okay, 2, next 5 and 7 are the minterms. बाकी सभी क्या है भाई? बाकी सभी zeros. This is what he's trying to create a new random variable. Okay, he's asking the probability that z equal to 0. So now you should tell me, when is z 0? Tell me. ठीक है. Basically what is happening in this question, please? This is important for EC, especially EC के लिए 1 marker के लिए बहुत important है. Okay, he's giving 3 binary random variables x1, x2, x3. ठीक है. The probabilities of the binary random variables are given. ठीक है. Now he's creating a new random variable using this x1, x2, x3. His नया value create कर रहा है called z. ठीक है. So z is nothing but a function of x1, x2, x3. Normally we say f of abc ना. Normally हम f of abc बोलते हैं, वैसे ही it's z of x1, x2, x3. So now he's asking the probability that z is 0. So z 0 कब होगा बताइए? There are 4 cases where z is 0. Please understood. 4 cases हैं जहाँ पे z equal 0. So z0 के लिए क्या क्या है बताइए? ठीक है. So probability that z is 0. Understood. Probability z equal 0 कब होगा बताइए? कब होगा? When x1 equal to 0, probability that x1 equal to 0, okay, comma x2 equal to 0, okay, okay, and x3 equal to 0. यानी मैं क्या, so what I'm trying to tell you is basically there are 4 cases, 4 cases है. z0 के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए तीनों जीरो होना चाहिए. अंडरस्टूड. यहाँ पे तीनों जीरो हैं. ओके, x1 भी जीरो, x2 भी जीरो, x3 भी जीरो. और दूसरा क्या हो सकता है बताइए? दूसरा क्या हो सकता है? ओके, x1 जीरो, ठीक है, x1 जीरो, x2 एंड x3 एज 1. ओके, और probability of x1 is equal to 0, ठीक है, कामा x2 is equal to 1, x3 is equal to 1. ठीक है. और क्या हो सकता है बताइए? और क्या हो सकता है? 1 0 0 भी है. ठीक है. probability of, ओके, x1 is equal to 1, x2 is equal to 0, x3 equal to 0. ओके, और फोर्थ केस क्या है बताइए? फोर्थ केस probability of x1 equal to 1, ओके, x2 equal to 1 एंड x3 equal to 0. x3 equal to 0. 4 पॉसिबिलिटीज है. क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन में ही इज टेलिंग दैट there are 3 random variables, 3 binary random variables x1, x2, x3. Using this he is creating a new function. He is asking the probability of z equal to 0 कितना है, क्या है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ट्रूथ टेबल. ओके, ट्रूथ टेबल लिखा, ये तो ईजी है. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन इज z0 कब होगा. ही इज आस्किंग द probability for z0. तो क्वेश्चन इज व्हेन इज द z0. z0 होने के लिए 4 केसेस हैं. ठीक है. कौन कौन से केसेस बताइए? m0, ठीक है, नेक्स्ट m3, नेक्स्ट m4 एंड m6. वही लिखा. ठीक है. So now he's, the interesting word here is independent. Okay, clearly बोल रहा है independent. So according to definition of independent क्या है भाई? According to definition of independent, suppose we say probability of AB is equal to probability of A into probability of B, and this probability of A into probability of B if A and B are independent events. A and B are independent events. A and B are independent events. Similarly, probability of ABC is equal to probability of A into probability of B into probability of C if they are independent. This directly comes from the Bayes theorem. ठीक है. So when ABC, when we say A, B and C are independent, okay, यानी एक दूसरे, there is no relationship, ठीक है, no relationship between each other, so then we say like this. So यहाँ पे directly हम क्या लिख सकते हैं बताइए? All 3 of them are independent. So Z0 होने के लिए 4 cases है, यानी x1 0, x2 0, x3 0, but 3 are independent. So this we can write it as, understood, this we can directly write it as, okay, directly हम लिख सकते हैं as, ठीक है, इस केस को हम directly लिख सकते हैं, okay, directly as probability of x1 equal to 0 into probability of x2
equal to 0 into probability of x3 equal to 0. That means I'm splitting. So basically these three I'm splitting, understood, x1 0 into x2 0 into x3 0, ठीक है. सो डायरेक्टली ऐसा स्प्लिट करके लिख सकते हैं, अंडरस्टूड, स्प्लिट करके लिख सकते हैं, ठीक है. बस बाकी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. दूसरा केस क्या है बताइए, दूसरा केस क्या है. यहाँ पे वी कैन राइट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू 0 into probability of x2 equal to 1 because they are independent random variables. Probability of, okay, next probability of x3 equal to 1. Okay, similarly we can write it here, understood. Probability of, ठीक है, x1 equal to 1 into probability of x2 equal to 0, okay, into probability of x3 equal to 0, please, understood, 0. और यहाँ पे भी सेम लिख सकते हैं, probability of x1 equal to 1, okay, into probability of, okay, x2 equal to 1 into probability of x3 equal to 0. That's it. Now simply keeps make substitutions. सिंपली मैं सब्स्टिट्यूट कर दो. x1 0 का कितना प्रॉपर्टी दिया बताइए, x1 0 का 0.3, ठीक है. सो इसका 0.3 इंटू 0.4 इंटू दिस इज 0.5, ओके. सो यू कैन सिंपली, सो वी कैन सिंपली से दिस इज 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 4 आर 12, 60, 60 पे 1000, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई 1000, ओके. इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, ठीक है. दिस इज नथिंग बट, ओके, 3/10, ओके. सो x2 1 का कितना प्रॉपर्टी बताइए, x2 1 का कितना है 0.6, 0.6 मतलब 6/10, ओके. x3 1 का कितना प्रॉपर्टी है, x3 1 का 5/10. सो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा बताइए, 18, 18 5 आर 90, ओके. सो बेसिकली दिस नथिंग बट 90/1000, ओके, 90/1000. सिमिलरली इसका देख लेते हैं, इसका 7/10, ठीक है, इसका 4/10, ओके, इसका 5/10, ओके. 5 4s are 20, 140, 140/1000, ओके. सिंपल, अंडरस्टूड, सिंपल. नाउ इसका कितना है बताइए, दिस इज नथिंग बट 0.7, राइट, ओके. x1 इक्वल टू 1 का 0.7, सो 0.7 मतलब दिस इज 7/10, ठीक है. इसका x2 इक्वल टू 1 का 6/10, ओके. इसका कितना होगा, x3 इक्वल टू 0 का कितना होगा, x3 इक्वल टू 0 का 5/10, ओके. सो बेसिकली 6 5 are 32, 10/1000, okay. So simply add up please, what is that you are going to get. Total you are going to get 60 plus, okay, 60 plus 60 plus 90, 150, 150 plus 140, okay, 150 plus 140, okay, 150 plus 100, 250, 290, okay, 290 plus 210, okay. So 290 divided by 1000 and total probability that z equals 0, and that's probability of z equals 0. So 290 plus 10, 300, 500. So basically you are getting 0.5. Understood? You are getting 0.5. Okay. So the answer what we are getting is simply 0.5, please. Understood? 5 by 500 by 1000 is nothing but 0.5. So the probability of z equals 0 is nothing but 0.5. ठीक है, इट्स अ सिंपल केस प्लीज, अंडरस्टूड, सिंपल केस, ठीक है. इट्स वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल टफ नहीं है, अंडरस्टूड, बिल्कुल टफ नहीं है. 3 4 12 60, ओके, राइट. सो नाउ दिस इज नथिंग बट 3 into 6, 3 into 6 18, 18 5 are 90, correct, okay. Now this is nothing, I'm just verifying. So this is nothing but 7 7 4s are 28, 28 into 5, okay, 20 into 7, 20 into 7, okay, 140, correct. Next okay, 7 6 are 40, 30 to 10, correct, everything correct, perfect. So the answer for this question is 0.5, okay. It's pretty simple, pretty straightforward, understood. बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है एंड इंटरेस्टिंग है, बट एक्सपेक्टेड फॉर 1 mark. These model questions we can expect especially in the ECE. Electrical में very very less probability, and less probability. Electrical में these questions coming is less probability, ठीक है. Okay friends, I hope that you understood this simple question.